एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल फेस दिवाली ग्लैम मेकअप लुक यूजिंग ऑल Maybelline products only. So I'm going to light up this festival season with Maybelline. Maybelline has sent me this makeup mystery box and there are many products in this mystery box and I'm going to use all these products and create a glam festival makeup look. हो गई मेकअप की बात, बस इस वीडियो में और क्या स्पेशल है। सो इस वीडियो में हम खेलेंगे एक गेम, नेवर हैव आई एवर। सो ये गेम खेलते खेलते हम इस मेकअप ट्यूटोरियल को करेंगे ताकि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाए, कुछ नया हो जाए। एंड देखते हैं, अगर मैंने इसमें से कुछ चीजें पहले नहीं की होगी तो वो मैं आज इस वीडियो में जरूर से करूंगी। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू यूज इज दिस Maybelline कंसीलर इन द शेड 40 कैरेमल। एंड इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं अपने थोड़े बहुत जो ये डार्क स्पॉट्स है उनको हाइड करूंगी। इफ यू हैव डिस्कलरेशन, आप थोड़ा सा डार्क शेड का कंसीलर यूज कर लीजिए, तो उससे थोड़ा सा जो आपका डिस्कलरेशन है वो कम हो जाएगा। To set this concealer, I'm going to use this Fit Me Loose powder in the shade 25 medium. Next, I'm using Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. I'm in the shade 238 Rich Tan. This foundation is very good for normal to oily skin and बहुत ही अच्छा coverage है इसका, guys. Like you can see this. Never forget to put foundation on your neck, guys. Otherwise बहुत अजीब लगता है जब neck and face में difference दिखता है। Okay guys, so this is a game time. Let me pick one shade and answer it. And okay, never have I ever overlined my lips. Overlined my lips. Yes, actually guys, मैं ओवरलाइन नहीं करती हूँ अपने लिप्स को, आपको पता ही होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव फुलर लिप्स। सो मैं कभी ओवरलाइन नहीं करती हूँ, लेकिन हम आज के ट्यूटोरियल में ओवरलाइन करेंगे। सो मैं ओवरलाइन करूँगी अपने लिप्स को लास्ट में जब लिपस्टिक लगाने की बारी आएगी। सो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me कंसीलर इन द शेड 30 एंड इसको मैं अपने अंडर आइज पर लगाऊंगी। जहाँ भी आप चाहते हैं ना कि आपके फेस पे थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट दिखे, वहाँ पे आप कंसीलर लगाइए। ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो एंड शिन। Again, game time. So it says, never have I ever baked my face. No guys, I've baked my face many times because I love baking and contouring. So I have baked my face, but today also I will bake because I think अगर हम फेस्टिवल लुक क्रिएट कर रहे हैं तो पहले बेस बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड स्वेट एंड वगैरह से भी हमारा मेकअप ख़राब ना हो। फॉर बेकिंग आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 25 मीडियम। ओके, सो बेकिंग को हम 5 मिनट्स देंगे, उसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज फिट मी कंसीलर इन द शेड 40 कैरेमल टू कंटूर। Okay, so I have blend my concealer and it's time to remove this loose powder. गेम टाइम। नेक्स्ट शेड जो मैं पिक करने वाली हूँ वो है ये, एंड दिस इज नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ हाइलाइटर। सो गाइज, हाइलाइटर, I have used highlighter many times
because I just love using highlighters. For eyeshadow, I'm going to use Maybelline New York the City Mini Palette. For crease, I'm going to use this brown shade. So next मैं यूज कर रही हूँ ये शेड अपने लिड पे अप्लाई करने के लिए. Next I'm going to use this shade on my eyelids. अब ये मैट शेड अप्लाई करने के बाद ग्लिटर शेड अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्लिटर शेड और थोड़ा सा उभर के दिखेगा आपकी आईज पे. अगेन दिस ब्राउन आई शेडो on my lower lash line. Next I'm going to use this Maybelline line tattoo crayon pen and ये जो है यहाँ से retractable है तो आपको शार्पन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्ट आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा. I'm going to do eyeliner with the same pencil. And again I'm going to blend that liner with a brush to give it a little bit smoky look. Game time guys. So next shade which I'm gonna pick is this one. This says never have I ever contoured my nose on my own. I have contoured my nose many times, many times. So okay, so let's pick the last one. Never have I ever used a setting spray. I have used setting spray many time, but जब मैं ट्यूटोरियल्स कर रही होती हूँ मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ट्यूटोरियल के बाद फेस वॉश कर लेना होता है तो मैं कम यूज़ करती हूँ. लेकिन हाँ जब मैं मेकअप करती हूँ बाहर कहीं जाने के लिए तो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ. एंड यू नो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज हमने गेम खेली तो रेगुलर ट्यूटोरियल से कुछ अलग हो गया ये. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना यूज इज दिस Maybelline Colossal वाटरप्रूफ मस्कारा. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना यूज इज दिस फिट मी ब्लश इन द शेड 25. बहुत ही अच्छा सा एंड नेचुरल सा पिंक टोन है एंड आई थिंक ये सभी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट नहीं है, हर कोई लगा सकता है. सिर्फ यहाँ पे लगा के गोल गोल ब्रश नहीं घुमाना है, आपको इसको इस तरीके से लगा के ब्लेंड करना है अपने जो आपने कॉन्टोर किया है उसमें, तो भी ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक लगेगा. एंड कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा ही लगाने लगी हूँ because I love blush. Next product I'm going to use is this Maybelline Lasting Fix Makeup Setting Spray. Okay, and let it dry. Next I'm going to use this Maybelline Master Chrome highlighter and this is in the shade Molten Gold and I'm going to use this. सो आप चाहें तो आप फैन ब्रश भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस फैन ब्रश ऑल्सो लगाने के लिए, बट मुझे फैन ब्रश से ज़्यादा बेटर ये ब्रश लगता है. इससे मेरा एकदम प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है हाइलाइटर. ऑन नोज, chin, little bit on forehead to give shine. गाइज अब हम एंड की तरफ पहुंच चुके हैं एंड लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है Maybelline की लिपस्टिक. सो आई हैव टू ऑप्शंस. दिस इज़ इन द शेड 220 एम्बिशियस एंड दिस इज़ इन द शेड 170 इनिशिएटर. सो मैंने जो लुक अभी किया है एंड जो मैं ये फेस्टिव लुक कर रही हूँ इसमें आई थिंक रेड लिपस्टिक विल लुक मोर गुड, मोर बेटर.
सो हम ये लिपस्टिक यूज करेंगे। सो अगर आप देखेंगे गाइज, इसकी वॉन्ड इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा प्रिसाइज इन्होंने दी है कि आपको किसी भी लिप लाइनर की जरूरत नहीं है, किसी ब्रश की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी से अपनी लिपस्टिक अच्छे से लगा सकते हैं, या फिर ओवरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। Yes guys, I have overlined my lips today and please मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर से कि कैसे लग रहे हैं मेरे lips. And yes guys, this is the final look. So let me show you guys what I got in this mystery box. So mystery box में मुझे काफ़ी products मिले हैं. So इसमें है loose powder, then a compact, एवरीथिंग इज फिट मी, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 2 कंसीलर्स है। एक है शेड 40 कैरेमल फॉर कॉन्टोर एंड अनदर वन इज 30 हनी। उसके बाद है ये आई शेडो पैलेट, द सिटी मिनी पैलेट बाय मेबलिन। नेक्स्ट है मेरे पास मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो दे रहा है ये। कोलोसल मस्कारा फेवरेट। बाद है मेकअप सेटिंग स्प्रे। Then I have a blush in the shade 25. Next I have this line tattoo crayon pen. I've used this as kajal and as eyeliner both, and दोनों ही तरीके से ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद है ये 2 लिपस्टिक शेड्स 220 ambitious and 170 initiator। मैंने 220 ambitious अभी लगा रखी है अपने लिप्स पे, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल शेड है ये। एंड लास्ट एंड फाइनल माई फेवरेट Fit Me का फाउंडेशन। सो दिस इज Fit Me Matte Plus Poreless Foundation Normal to Oily Skin and I'm in the shade 238 Rich Tan। एंड मैंने आपको प्रोडक्ट सारे लास्ट में इस वजह से दिखाएं ताकि आप प्रोडक्ट्स के साथ वो फेस पे कैसे लगेंगे आप देख सको। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई रियली लव्ड दिस लुक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा है ये। एंड येस, ऑफ कोर्स दिवाली पे आप इस लुक को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा, इस गेम को एंजॉय किया होगा, बिकॉज हमने कुछ नया किया था इस बार। एंड थैंक यू सो मच मेबलिन फॉर सेंडिंग मी ऑल दीज गुडीज, बिकॉज मुझे सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं मेबलिन के इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, बिकॉज मेबलिन के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं, साथ ही साथ बहुत अफोर्डेबल भी आते हैं। सो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर अगर आप एडवांस मेकअप करते हैं, कोई भी मेकअप करते हैं, तो आप इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, बिकॉज अफोर्डेबल है, ईजी टू ब्लेंड, ईजी टू यूज़, कोई ज़्यादा झंझट वंझट नहीं है यूज़ करने में, तो बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया एंड आपको मज़ा आया होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो एंड कमेंट करो, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब इस वीडियो को करती हूँ ये खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।